My dear friends, I extend a very hearty welcome to every one of you for today's session on location of 5 shoe points according to TC meridians by our learned faculty, Mrs. Shamla Shukla ji and Mrs. Nisha Gupta ji. So before we start the session, let us do just about 2-3 minutes of meditation. And I request every one of you to sit straight. Sit straight, let your legs be crossed, your hands be like that folded. Okay, so your aura, your energy does not get disturbed. Now close your eyes. You have to simply watch your thought. Watch your thought. As you watch your thought, as you observe your thought, as you see your thought drops. Flow of thought is nothing but mind. Mind disappears. In other words, your state of mind will become very cooler and calm. See, if our frequency of thoughts is more than 14 per second, it is called mind is in beta state of mind. If your frequency of thought is between 7 to 14 thoughts per second, then it is called alpha state of mind. In beta state of mind, we will be under stress, anger, anxiety, tension, etc. Whereas by simply observing the mind will come to alpha state. Relatively, you will be cool. You will not be agitated. You will be meditated. State of mind will be under meditation. If you practice for some time regularly, you can take your mind to theta state of mind, where frequency of thought will be only from about 3 to 7 thoughts per second. You'll be very, very, very meditative. Nobody can trigger unhappiness or anger in you. 1 to 3 thoughts per second is called delta state of mind. Delta means where the river meets the sea. In meditation, where the individual consciousness meets the universal consciousness. It is called samadhi sthiti. Samadhi means equal to adi, beginning. That means, you are on par with the universal consciousness. By practicing this meditation, you will have a grip over your mind instead of mind having a grip over you. Once you observe the mind disappears. When there is no mind, it cannot take you haywire. So automatically you will come to presence. Your perception level will improve. Whatever our faculty teaches you today, it will be registered in your mind and it will remain in your memory for a long time to come. You will also slowly come to know that you possess the mind. You are not the mind. You can see the mind. You possess your body, but you are not the body. The real you, the true you, is the witness conscious in you, which is witnessing the mind. The essence of all religions is to know thyself, to know who you are. By practicing this meditation, you'll come to know that you are the witness consciousness. Mind becomes empty, all blemishes will go away. You become, your mind becomes pure and pure.
without any blemishes. Your mind will be filled with love, universal love. Observe your mind, don't allow any thoughts to crop up. Slowly rub your palms, make a cup out of it, close it on your eyes. Slowly open your eyes. Friends, I'm sure next today, tomorrow, and day after tomorrow, you will have a captivating session from our faculty. All of you have enjoyed the first session thoroughly, and I'm sure your confidence level would have increased to locate the points, 5 shoe points. By just learning 5 shoe points, we can balance the whole energy in the body, because our body is constituted only by five shoe point, 5 element point. There is nothing other than 5 shoe points in the body, energy. So I don't want to poke my nose in this subject. I extend a very hearty welcome to Srimati Nisha Gupta ji and Shamla Shukla ji, and hand over the session. Welcome, madam. Namaste. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Before we start the session, let us invoke the energy of creator of all that is and take the blessings of our teachers, Hemka sir, JP Agarwal sir, Ravindran sir, and all the teachers who have touched our life in some point of time, and whatever we are today is because of them. Also take the blessings of our parents, and let us start the session. So let me revise once more that last session, I think Priyanka ji, you'll have to pin me. All right. So in the last session, we started with the 60 command points, the location on the body, as well as the ball. As we told you that the 60 command points basically are the switches in our body. So what are the switches? Switches are basically the 5 element points. So every meridian has 5 switches. That is the 5 element points. And those are the 5 shoe points. So we have 12 meridians. So 12 into 5 is 60. So 60 command points. So 60 command points means 60 switches that we have in our body. So whenever, like say for example, if we have, like in every house we have switchboard, and every switch, we can control a particular device. Say for example, if you are feeling very hot, so we have a switch for AC. If you're feeling very cold, you have a switch for heater also. So similarly, such kind of switches God has given us in our body. So whenever you feel cold, you can use the heater point. Whenever you feel hot, you can use the AC point. All right. Last time we covered 3 meridians, 3 yin meridians. So can anybody tell me which meridians we covered? You can put it on the chat box. Which 3 yin meridians we covered? Yes, it's a revision. Yes, lungs. Very good. Lungs, pericardium, and heart. Very good. So do you remember the 5 shoe points of lungs, pericardium, and heart? No problems. You just revise it, because at the end we will require this to give you further more information. So let us start today's session. So last time we completed 3 yin meridians. Today we will be completing the 3 yang meridians. Okay. So to plot the particular points on the body, I invite Nisha ji. Nisha ji, over to you. Thank you, Shukla ji. Thank you, Ravindra sir. Thank you so much. हम अपने सभी गुरुजनों, माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए स्वर्गीय श्री माता प्रसाद खेमका जी की ब्लेसिंग्स के साथ उनकी सूक्ष्म अनुभव को एहसास करते हुए एंड जेपी अग्रवाल सर, आदरणीय जेपी अग्रवाल सर जी की शिक्षाओं को साथ लेते हुए उनकी ब्लेसिंग्स के साथ आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा, हमने हार्ट पे, पेरिकार्डियम पे एंड लंग्स पे काम किया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने फ्लोटिंग करके दिखाया।
अच्छा लगा कि उन लोगों को सबको सीखने का शौक है, अनुभव भी है और बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रेन भी हुए। इससे हमें एनर्जी मिलती है, सामने वाले को बहुत एनर्जी मिलती है कि अब और अच्छा करने की कोशिश करें ताकि सभी अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकें एक दूसरे के साथ। आज हम LI, SI एंड ट्रिपल वार्मर की एनर्जी, उनके ही पेयर ऑर्गन जो है लास्ट टाइम की क्लास की उसी पेयर ऑर्गन की चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे, वो भी बॉडी पे ही, फिजिकल पे किस तरह से हम दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये है हमारी LI मेरिडियन। LI मेरिडियन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म होती है। Priyanka ji, you'll have to pin Nisha ji so that she is visible. Thank you. यहाँ पे हमारा LI1 देखिए, आपको मैं अच्छे से दिखाने, LI1 हमारा यहाँ पे प्लॉटिंग है। उसके बाद हम इसी तरह से चलते जाएंगे तो इस जगह पे देखिए, यहाँ आप ऐसे फील करेंगे तो यहाँ बोन, एक हल्की सी बोन फील होगी और उससे पहले आपको एक डिप्रेशन दिखेगा। जो डिप्रेशन है वो हमारा LI2 है। डिप्रेशन के बिल्कुल थोड़ा सा बोन ऐसे नकल है, ये नकल के जब अंदर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे हमें एक और डिप्रेशन मिलेगा। देखिए, इंग्लिश में एक्सप्लेन अभी थोड़ी देर बाद किया जाएगा, पहले हिंदी वालों के लिए है, उसके बाद इंग्लिश में शुक्ला जी करेंगे आपको एक्सप्लेन। यहाँ पे ये देखिए LI3, ये LI3 पॉइंट है हमारा। इस तरह चलते जाएंगे तो ये LI4 को आप छोड़ देंगे क्योंकि हमारा ये पॉइंट इस टाइम नहीं है। LI3 के बाद ये 3, फिर इस तरह से आएंगे। तो देखिए, आप इस तरह से अपनी बोन को, कलाई को कोशिश करें, मेरे साथ साथ आप करने की कोशिश करें ताकि आपको वो बोन मिल सके जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे आप एक जब ऐसे आप खिलाओगे ना तो एक लंबी लाइन सी ब्रिज सा एक यहाँ पे आपको बोन फील होगी, ये वाली। उस बोन से पहले ये वाला डिप्रेशन हमारा LI5 है। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ऐसे आपको करना पड़ेगा, करने के बाद ही ये बोन आपकी उभर के आती है। ये वाली, ये बोन जब आपकी उभरेगी तो उसके ठीक नीचे ये वाला आपका LI5। LI5 के बाद हम आते हैं LI11 जो हमारा वाटर पॉइंट है, सॉरी अर्थ पॉइंट है। यहाँ पे देखिए, इस तरह से क्रीज करेंगे ना आप अपनी इसको, तो ये वाला पॉइंट जो है ये LI11, ये अर्थ पॉइंट है। बाद में आपको इसके बारे में सारा डिटेल बताते हैं। एक बार दोबारा देखिए प्लीज। LI1 0.1 खून पे है नाखून से। LI1, LI2 देखिए, ऐसे देखते जाएं और LI2 मिलेगा आपको। इस नकल के फौरन बाद यहाँ डिप्रेशन है LI3। इसी बोन को पकड़े रहें, ऐसे चलते जाएंगे तो ये वाली जो बोन है आपकी, इस तरह से करते हुए यही वाली बोन जो है यहाँ पे एक लाइन बना रही है, उसके ठीक नीचे इस साइड, कलाई वाली साइड आपको ये वो LI5। उसके बाद ये वाला हमारा है LI11। अब आते हैं ट्रिपल वार्मर। ट्रिपल वार्मर 1 बिल्कुल नेल के पास। ट्रिपल वार्मर 1 अल्नर वाली साइड है, स्मॉल टुवर्ड स्मॉल फिंगर। इससे अब हम चलते जाएंगे तो ये वाली साइड से ऐसे बोन को पकड़े, ये देखिए आपको ये इस वाली, इस तरह से भी इसको आप लोकेट कर सकते हैं। ये वाला कॉर्नर नकल के बिल्कुल नीचे, यहाँ बहुत पेनफुल होता है। हाइपोथायराइड, थायराइड वालों को पेन बहुत होती है, सीवियर पेन मिलती है वहां पे उनको। तो यहाँ पे अगर आप उनको टच करके देखोगे तो बहुत पेन है। वैसे सबको ही होती है जो प्रॉब्लम में है थायराइड का, क्योंकि बहुत अच्छा ये पॉइंट है। तो थायराइड वालों को काफी पेन, अच्छा खासा पेन मिलता है यहाँ पे। तो इससे हम आगे इसी नकल को छोड़ के यहाँ नीचे आएंगे। यहाँ पे भी एक डिप्रेशन है। मैंने आपको उस दिन बताया था कि जितने भी एक्टिव पॉइंट प्रभु ने हमें दिए हैं, नेचर ने हमें दिए हैं, उनमें डिप्रेशन है सब में। ये वाला पॉइंट हमारा ट्रिपल वार्मर 3। बाजू को ऐसे ही रखना है। अगर इस तरह से आप रखोगे तो लोकेशन सही नहीं होगी। इसी तरह से बाजू को रखें और यहाँ से जो हमारा ये रिस्ट जॉइंट है, यहाँ से आपको 4 फिंगर लेना है
और ये वाला 4 फिंगर लेते हुए यहाँ पे हमारा ट्रिपल वार्मर 6, ये ठीक है, ये ट्रिपल वार्मर 6 बिल्कुल इसी बोन, ये वाली जो बोन है आप इस तरह से आप चेक करें, सेंटर और फिर ये वाली जगह पे हमारा ट्रिपल वार्मर 6। इसके बाद ट्रिपल वार्मर 6 के ठीक बाद हम जब ऐसे बोन ऐसे चलते हैं तो यहाँ नहीं है हमारा ट्रिपल वार्मर 10 जो है ना, जब हम बोन को ऐसे करेंगे ऐसे, तो इस वाली बोन जो उभरी हुई है इसके ठीक नीचे डिप्रेशन है, ये वाला यहाँ है हमारा ट्रिपल वार्मर 10। ये पॉइंट भी पेनफुल होता है, जिनको रिस्ट में टेनिस एल्बो पेन होती है उनके यहाँ पे पेन काफी मिलता है। देखिए ध्यान से देख लीजिए, ये वाली बोन जो उठी हुई है इसके ठीक नीचे ऐसे करके भी आपको पता चल जाएगा और ऐसे भी पता चलता है, लेकिन ज्यादा ऐसे करके पता चलता है डिप्रेशन का। एक बार दोबारा देख लें, ट्रिपल वार्मर 1, ट्रिपल वार्मर 2, ट्रिपल वार्मर 3, ट्रिपल वार्मर 6, और ट्रिपल वार्मर 10। अब SI मेरिडियन पे पहुंचते हैं। ये हमारा SI1, देखिए SI1 इस जगह पे ऐसे जाएंगे तो ये नकल जो है, ये वाली बोन है जो हमारी उभरी हुई, इस बोन पे SI2 बोन से नीचे डिप्रेशन पे। फिर इसको कैसे पहचानेंगे, ये वाली जो उभरा हुआ होता है मुट्ठी बंद करते ही, ये वाला हमारा, बस इसको पकड़ लें, ये हमारा SI3 सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, EOV के हिसाब से भी बहुत अच्छा पॉइंट है ये। इस तरह से SI3। अब SI4 को बहुत लोग गलती से यहाँ देख लेते हैं, आप इस तरह से जाएंगे तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे एक बोन आपको मिलेगी, मेटाकार्पल जो बोन है यहाँ पे वो एंड है, ये वाला है हमारा SI4। इसको नहीं देखना, ये हमारा पॉइंट नहीं है, ये सोर्स पॉइंट है। इससे आगे बढ़ेंगे ना जैसे ही, तो अल्नार बोन यहाँ स्टार्ट होती है, उससे पहले इस ये वाला जो पॉइंट है ये SI4, इस वाले पॉइंट अल्नार बोन से पहले जो डिप्रेशन है ये वाला हमारा SI5 है, और SI6 यहाँ पे है। बहुत ही पास पास ये पॉइंट है, बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। देखिए आप मेरे साथ साथ देखिए, फील करके देखें, आपको दिखेगा, ये भी ऐसे भी करके देखेंगे ना आपको, तब भी डिप्रेशन यहाँ पे बहुत अच्छे। ये वाली बोन जो जा रही है यहाँ, इसका देखो लाइन सी बननी शुरू हो गई ये वाली बोन की, और बिल्कुल उसके गड्ढे में है ये डिप्रेशन में, ये वाला। यहाँ पे हमारा SI4, यहाँ पे है हमारा SI5। अब इसी तरह से SI5 के बाद इसी बोन के साथ साथ चलते जाएंगे, ये वाला जो ये उभरा हुई पार्ट देखो, ये हड्डी है, सब महसूस करके देखें, यहाँ पे जो बोन है ना, उस बोन के ठीक अंदर साइड, ये वाली साइड मीडियल साइड पे पहुंचना है। ये है हमारा SI8। ये बोन, ये वाली बोन फील करें, ये वाली जो होती है इसके ठीक अंदर की तरफ, यहाँ ऐसे इकट्ठा करेंगे, ये भी पॉइंट आपको ऐसे ही देखने में पता चलेगा। तो ये वाला हमारा SI8। एक बार फिर से SI मेरिडियन को देखते हैं, SI1, 2, 3, अल्नर बोन को के बिल्कुल पहले SI5, इसी बोन पे चलते हुए ये वाली बोन को छोड़ देंगे, और ये हमारा गड्ढे में है, क्योंकि ट्रिपल वार्मर देखो यहाँ था डिप्रेशन में, और ये है हमारा यहाँ SI8। बाकी अगर नहीं क्लियर हुआ तो PPT के माध्यम से देखिए, PPT की हेल्प से आपको समझ आएगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर ग्रुप में डालें, या लास्ट में अगर क्वेरी सेशन का टाइम हुआ तो उसमें बताएंगे हम। कंटिन्यू शुक्ला जी। ओके, थैंक यू।
Just a minute. Let me just fix it. So let us start. Priyanka ji, you'll have to pin my screen so that the points are visible. So this is Li1 at the base of the nail. Okay, and remember these are all young meridians. So it will come on the back side. So on the base of the nail, we have Li1, and this is a metal point. One more thing I would like to remind you that the yin meridian, it starts from wood, and the yang meridian, it starts from metal. Okay, so Li2 is near before the knuckle in the depression. See, it is very easy to find the points because what happens is all these special points, we always find some depression. So that is easy for us to locate. So on that depression near the knuckle is Li2, and this is a water point. Now here, this is Li3. Now, one point we saw Li2, which was before the knuckle. Now this is after the knuckle, at the depression. You have to feel the depression. Only then you will be able to understand. And yes, you will find it. It's very, very easy. And this is a wood point. Now this is Li5. It's again at the crease here of the wrist. You again will find a depression here. So again, this point is also very, very easy to look. This is a fire point. Now, this is a He-See point, and this is Li11. This is the earth point. Here at the elbow, when you fold your hand, you will find a crease here, just near the crease, So that is the next point. Now, let us go to the triple warmer. I hope it is clear with everyone, because this is the effort that we are trying to show, because on the body, if you miss out to something, so you can have a revision over here. Now, triple warmer 1 is on the index finger towards the small finger at the base of the nail. And this is a metal point. Now, this is a water point, triple warmer 2. It is also called as triple energizer. Well, again, it is at this knuckle, here. You will find a depression here. So this is triple warmer 2. This is triple warmer 3, and it is a wood point. Again, you have to go straight from triple warmer 2 and then go ahead. There you will find that point. So whenever you search or try to locate it on the body, just find the depression. So you will definitely find the depression. So all these points are all very important points, element points, and God has made it easy for us to locate it, because then it is all the points are on the depression. Now this is triple warmer 6. It is 3 fingers away from 3 chun away from the wrist, and this is a fire point. Now this is at the elbow. This is the bone. This is the humerus bone on the top, and when this in the depression, here is triple warmer 10, and it is an earth point. Now let us check the small intestine points. All right, so this is again at the base, and remember these are all yang meridians, so it will always start from this yang side. So this is on the base of the nail. This is a metal point, Si1. This is the water point, Si2. Again, you have to just find the depression near the knuckle. On the knuckle you will find a depression before the knuckle, and then that is Si2. This is the water point. Now this is a wood point, and Si3, see, it is easy. One point is above and one point is below the knuckle. So Si2 and Si3 is located this way. Now this is Si5. Again, you will have to check the crease here, and then you will find a depression here, and that is a fire point. This is earth point. Now here
it's in between this, the humerus bone and the, elbow bone here at the meeting. It is epicondyle. So here you will find SI8. Okay. So I hope it is clear. If anybody wants, I can repeat the PPT, or is it clear? You can put it on the chat box actually. Is it okay? Is it clear? Yeah, okay. So let us now plot these meridians on pure. Okay. And then at the end, I would like everyone to revise the last class that we did, lungs, pericardium, and heart, 5 show points. Then at the end, we will be, doing some other sessions. Okay. So over to you, Nisha ji, for the plotting of the meridians on pure. ओके, थैंक्स श्यामला जी। देखिए, उस दिन लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इन मेरिडियन को, जिन साइड की मेरिडियंस को, और हमने फ्लो को भी देखा था। आज हम यांग साइड की मेरिडियंस को देखेंगे। फ्लो को आपको याद होगा कि यहाँ पे अपवर्ड फ्लो था, यहाँ डाउनवर्ड फ्लो था। उसी फ्लो के साथ ही आपको बार बार ये याद करना पड़ेगा, बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। अभी मेरे साथ आप अपने मन में फिर से मेरे साथ दोहराएं, अपने मन में बोलें कि ये अपवर्ड फ्लो है, ये इन साइड था, ये आपको सबको पता है। ये यांग साइड है, तो ये डाउनवर्ड फ्लो है। तो हमारी कोई जो भी यहाँ पीछे वाली मेरिडियन आएंगी, एक तो वो मेटल से स्टार्ट होंगी, सबसे बड़ी बात, और एक वो डाउनवर्ड फ्लो है यहाँ से हाथ वाली। ये हैंड की है और ये लेग्स की है। हैंड में ये आपको डाउनवर्ड फ्लो में ही देखना पड़ेगा, और मेटल से स्टार्ट होती है। इस साइड में अपवर्ड है और ये वुड से स्टार्ट होती है। ये एक थंब रूल है, इसको इसी तरह से ही आपको दिमाग में परमानेंट याद करना पड़ेगा और बार बार दोहराना पड़ेगा अपने माइंड। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी, आप लाइन मेरे साथ यहाँ तक सभी लाइन बनाएं। मैं आपको एक सेकंड लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ। इस तरह से 3 लाइन के साथ साथ आपने ऊपर वाले जो बिल्कुल नेल के साथ है हमारी लाइन, और जो वात जॉइंट पे है, 3 लाइन, एक ऊपर बिल्कुल नेल के साथ, एक यहाँ वात जॉइंट पे, और एक पित्त जॉइंट पे। इस जगह पे हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, इसलिए हमें ये लाइन देखिए ड्रॉ करनी पड़ी। अब एक सेंटर में लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसके एक ऊपर इक्वल डिस्टेंस पे हम देखिए, मैंने ये सेंटर में लाइन ड्रॉ की, फिर उसके ऊपर एक लाइन, फिर उसके नीचे एक लाइन, यानी कि ये हमारा वात जॉइंट की लाइन है, ये हमारे नेल प्लेट की लाइन है। उसके बाद हमारी 3 लाइन है, एक सेंटर में, 2 उसके इक्वल डिस्टेंस में। अब हम, क्लियर है सभी को फिंगर बिल्कुल? Yes, yes, it is clear. ओके, अब हम देखें LI1 बिल्कुल नेल पे हमारा LI1 पॉइंट है यहाँ ब्योल के हिसाब से। LI2 बिल्कुल उसके साथ, LI3 बिल्कुल उसके साथ। फिर हमने ये एक लाइन छोड़नी है जो हमने ये ड्रॉ की है साथ में। LI5 हमारा इस वात जॉइंट के ऊपर है, ये वाला देखिए द्वारा। 1 बिल्कुल नेल के साथ, 2, 3 एंड 5। इसके बाद है हमारा LI11, ये हमारा एल्बो पे आता है दिखाया। 1, 2, 3, 5, 11। इसके बाद ट्रिपल वार्म अप है। 1 नंबर 1 ट्रिपल वार्म अप का ये रहा। उसके बाद सेकंड वहीं पे उसी तरह जैसे LI2 की है, उसी तरह से आपने ट्रिपल वार्म अप 2 यहाँ देखना है। ट्रिपल वार्म अप 3 बिल्कुल सेंटर जो लाइन है उस पर ट्रिपल वार्म अप 3 हमारा आता है। ट्रिपल वार्म अप 5 हमारा यहाँ थोड़ा सा फर्क है, यहाँ LI5 है
और हमारा यहाँ पे ट्रिपल वार्मर 4 आता है बिल्कुल बाथ जॉइंट के ऊपर। फिर हमारा 5 के लिए मैं लाइन ड्रॉ कर दूं 1 सेकेंड ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। आप मेरे साथ एक सेंटर लाइन लगाएं, फिर उसके ऊपर 2 लाइन इक्वल, फिर उसके नीचे 2 लाइन इक्वल। देखिए मैंने यहाँ बाथ जॉइंट के नीचे सेंटर में एक लाइन बनाई ये वाली, उसके ऊपर 2 लाइन, फिर उसके नीचे 2 लाइन। ये हमारा 5th जॉइंट की लाइन थी। आप इस तरह से चलेंगे 4 5 6 सेंटर वाली 7 8 9 10। यहाँ पे आराम से आप देखिए ये हमारा 4 है, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है 4, ये हमारा 5 है। अगर इक्वल लाइन आप लगाओगे तो बहुत अच्छे से आप अपने 5 पॉइंट को 6 पॉइंट को देख सकोगे। आज का टॉपिक का हमारा पॉइंट है 6, ये वाला बीच में, यानी कि बाथ जॉइंट से एक लाइन को आपने छोड़ना है और सेंटर वाली जो लाइन आपने ड्रॉ की है उसके ऊपर इस वाली और इस वाली लाइन के बिल्कुल यहाँ पे हमारा पॉइंट है। बाथ जॉइंट छोड़ के एक लाइन छोड़ के फिर ट्रिपल वार्मर 6, फिर ट्रिपल वार्मर 10। अब आते हैं SI मेरिडियन पे। एक बार और बता दूं आपको। 1 2 3 4 को छोड़ दो, 5 छोड़ दिया, 6। यहाँ पे लाइन इस तरह से 5 लाइन लगानी है बाथ जॉइंट और पित्त जॉइंट को छोड़ते हुए। सेंटर लाइन एक खींचनी है, 2 ऊपर 2 नीचे इक्वल डिस्टेंस पे, और सेंटर लाइन से ऊपर वाली जो लाइन है वो हमारा ट्रिपल वार्मर 6 है और ये है हमारा ट्रिपल वार्मर 10। अब आते हैं SI मेरिडियन पे। देखिए SI को SI 1 बिल्कुल नेल के पास, SI 2 SI 3, SI 4 को छोड़ दें, SI 5 पे बाथ जॉइंट बिल्कुल जैसे LI बाथ जॉइंट पे था SI 5 भी हमारा बाथ जॉइंट पे, और ये SI 8, ये तीनों ही एक ही लाइन में है। अब आप एक बार दोबारा SI मेरिडियन देखिए। SI 1 2 3 5 8। देखिए ये तो हुई आपकी ब्योल के हिसाब से। आपको ये पता है कि ये वुड से एनर्जी स्टार्ट होती है और ये वुड से स्टार्ट होती है, ये हमारी मेटल से स्टार्ट होती है। अब कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना प्लीज, बहुत ध्यान से, लिखना कुछ नहीं है फिलहाल, आप सिर्फ सुनिए। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया आपको और सिस्टम उसके बाद समझ आ जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो आप इसी तरह से ही परेशान रहेंगे, और कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया तो जिंदगी भर ये चीज तो भूलेंगे नहीं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड डिजीज क्या होती हैं, पहले मुझे जैसे एग्जांपल देने की आदत है, बड़े इजी से एग्जांपल लेमैन की तरह देना चाहूंगी ताकि और भी अच्छे से आपको क्लियर हो सके। आपको सभी को पता है कि ये जिंग बेल पॉइंट होता है हमारा। जिंग बेल पॉइंट एक्यूट प्रॉब्लम्स के लिए होता है। एक्सेस एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी इस पॉइंट पे होती है। कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, किसी को भी, कोई आपके पास पेशेंट आता है तो आपको प्रॉब्लम उसकी समझ आती है कि अभी अभी हुई है, तो आप इस पॉइंट से इस सारे पॉइंट ही प्रेस कर सकते हो बड़े आराम से। और इस वाली एनर्जी के मुताबिक अगर प्रॉब्लम आई है तो इस प्रॉब्लम से आपको निजात मिल जाएगी, उस पेशेंट को आप डायग्नोस कर पाओगे। जिंगल पॉइंट, वेल का मतलब क्या होता है, कुआं। आपने कुएं से पानी निकालना, कुएं से जैसे ही आप पानी निकालते हो तो जिस जगह भी आप डालोगे स्प्रिंग की तरह वो पानी उसमें जाएगा। तो पानी निकाला, 2 लोटे 4 लोटे 1 बाल्टी पानी निकाला, स्प्रिंग करके आपने किसी स्ट्रीम में, नाले में, जिसमें भी बहाया, वो तीसरा नंबर, पहला वेल, उसके बाद आ गया स्प्रिंग किया। स्प्रिंग करने के बाद आपके पास है स्ट्रीम, नाला। उस नाले में आपका पानी, आपकी तीसरी स्टेज है वो नाला जा रहा है, उसमें पानी अगर कुएं से निकलता ही रहेगा तो वो रिवर का रूप ले लेगा। 4th स्टेज में रिवर, 4th पैटर्न पे रिवर आती है। अगर रिवर तक भी नहीं कोई कुछ कंट्रोल होता तो वो समंदर में मिलती है, सी में। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ कि जिस तरह से मेटाफिजिकल तरीके से बताया मैंने, जैसे उस दिन रूम के लिए बताया था, उसी तरह से वेल के हिसाब से समझाया है कि जो आप आज तक सुनते आए हो, जिंग वेल, स्प्रिंग पॉइंट है, स्ट्रीम पॉइंट है,
रिवर पॉइंट, ही सी पॉइंट, ये है क्या, ये इस तरह से है। ये हमारे डिजीज के पैटर्न हैं, स्टेजेस हैं, जिनको हम उन्होंने बहुत इजी तरीके से हमें ब्रह्मांड के रूप में समझाया। लेक्चर में हमें हमारे गुरुजनों ने, शिक्षकों हमें जो समझाते आए हैं। तो उसी पे अब मैं बॉडी के ऊपर बताती हूँ आपको। पहले उस एग्जाम्पल के बाद मैं आपको इससे रिलेटेड क्या क्या डिजीज आती हैं और क्या क्या दिक्कतें क्यों आती हैं। ये हमारा वुड, फर्स्ट वुड, पीछे मेटल। मेटल क्या है? ड्राइनेस, उसकी एनर्जी। वुड क्या है? विंड, वात। ये वात को रिलेट करता है। जो भी जानते हैं थोड़ा बहुत आयुर्वेद या काफी अच्छे से आयुर्वेद को जानते हैं, उनको ये पता है कि वात, पित्त, कफ दोष क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं आयुर्वेद को रिलेट नहीं कर रही। यहाँ पे हर चीज में बॉडी तो बॉडी ही है ना, उसमें वात हो, पित्त हो, कफ हो, ये हमारी बॉडी के साथ ही चल रहे हैं, वो बेशक टीसीएम हो या आयुर्वेद हो। तो यहाँ पे मेटल और वुड की एनर्जी मिलके वात रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है हमारी, उनको उनको हमने देखना है डायग्नोस करते हुए कि अगर अभी अभी प्रॉब्लम आई है तो आपने सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर ही ट्रीटमेंट कर देना है। यहाँ पे मेथी की पट्टी, एक सिंगल मेथी का सिंगल लाइन भी लगा के आप उनको ठीक कर सकते हो। उसके बाद स्प्रिंग एरिया आता है, Li2, सामने वाले जो ऑर्गन है हमारे, उनको लेके चलते हुए वहां पे फायर है, आगे हमारी फायर एनर्जी है, और पीछे वाटर। अब देखिए यहाँ मेटल स्टार्ट हुआ तो वाटर हुआ ना, और आगे वुड था तो उसके बाद फायर। फायर और वाटर, 3 और 4, जल एंड अग्नि। ये पित्त हुआ टेम्परेचर रिलेशन में। टेम्परेचर रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम, फाइब्राइल डिजीज जैसे होती हैं, कोई भी टेम्परेचर रिलेटेड आपके पास पर्सन आया है, वैसे हमारे पास फीवर में तो आते कम हैं लोग, तीसरी चौथी स्टेज के पास पहुंच के ही आते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको पता चला कि एक्यूट के बाद आपके पास एक्यूट में नहीं पहुंचा, तो फेब्राइल डिजीज में कोई आया, टेम्परेचर की उसको दिक्कत है, जुकाम, खांसी, कफ, या गर्मी बहुत लग रही है, तो वो समझ लें कि वो उस टेम्परेचर रिलेटेड प्रॉब्लम को लेके आपके पास आया। तीसरे नंबर पे आती है स्ट्रीम। ये हमारा ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी आते हैं इसमें, स्ट्रीम में ही। तीसरे नंबर पे जब पर्सन आपके पास आया है तो वो थोड़ी सी और प्रॉब्लम बढ़ा के आया। और प्रॉब्लम बढ़ा के कैसे आया? क्योंकि अर्थ, पीछे अर्थ आ गई, सॉरी आगे अर्थ आ गई, और पीछे क्या है? वुड। आगे अर्थ, पीछे वुड। जैसे अर्थ और वुड, अर्थ का मतलब है जॉइंट, बोन्स, हमारी हड्डियां जितने, और विंड का मतलब मूवमेंट भी है, विंड को मैं मूवमेंट में भी लेती हूँ, सभी सबके लिए मतलब मूवमेंट भी है और वायु भी है। जैसे ही हमारे किसी भी जॉइंट में वायु का प्रकोप होता है तो हमारा फ्लूइड सूखने लग जाता है। और अगर मूवमेंट कम हो गई, सपोज करो मैंने इस रिस्ट से कुछ काम नहीं किया कुछ दिन, हमारी मूवमेंट कम होगी तो ये जाम होना शुरू हो जाए, क्योंकि अर्थ जमाव भी है, अर्थ का जमाव भी मतलब है। जैसे हमने शोल्डर को ना रोटेट किया ज्यादा, तो यहाँ पे भी अगर इस पे विंड का प्रकोप हो गया, बहुत हम कहीं जा रहे हैं गाड़ी में ना स्कूटर में अगर जा रहे हैं, तो वहां पे हवा चल रही है, तो हमें अगर ज्यादा बुरी तरह से लग गई, सर्दी का मौसम है या मौसम चेंज में, तो यहाँ पे हमारा शोल्डर वैसे ही विंड की वजह से भी पेन शुरू हो जाती है। तो जॉइंट रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है अर्थ और वुड में आएगी तीसरे वाले स्ट्रीम पॉइंट पे। अगर स्ट्रीम पॉइंट पे हम समझ लें, जितने भी आपके पास बहुत बहुत पेशेंट आते ही होंगे, और आगे भी अगर आप देखना चाहें कि इनको सर्वाइकल की, अभी मैं आपको फिजिकल पे जब एग्जांपल दूंगी तो आपको उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास पीछे फायर, आगे मेटल, पीछे फायर है, आगे मेटल। ये हमारी रिवर पैटर्न की डिजीज है। इसमें हमने एलिमेंट देख लिया अपना। जब फायर और मेटल मिलते हैं, फायर का मतलब हार्ट से भी रिलेट करते हैं हम, फायर को हम अग्नि के लिए भी देख सकते हैं, और मेटल लंग्स के रूप में भी देख सकते हैं, और मेटल ड्राइनेस एनर्जी के रूप में भी देख सकते हैं। क्योंकि फोर्थ स्टेज पे आ चुकी है, ये सिंपल कफ नहीं है, वात वाली कफ नहीं है, ये मतलब एक्यूट वाली कफ नहीं है, ये फोर्थ स्टेज की ब्रेथलेसनेस डिजीज, जितनी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज होंगी वो आपके फोर्थ पैटर्न पे आपको मिलेंगी। वो क्रोनिक से थोड़ी सी पहले की हैं, लेकिन हमारे पास जो पेशेंट आएंगे ना, वो इसी तरह की स्ट्रीम और
रिवर वाली ही प्रॉब्लम लेके आते हैं, जल्दी से कोई पेशेंट हम पर विश्वास ही नहीं करता। तो फिर हमें उनको उनके ऊपर अपना कुदरत का दिया हुआ नायाब तोहफा है जो हमारी ये थेरेपी, हम उसके जरिए उनको ठीक करते हैं। रेस्पिरेटरी में उनके पास आपको ड्राई कफ वाले जो काफी सालों से, पता ही नहीं कितने सालों से खूं 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 करते, खांसी करते हुए, बहुत सूखी खांसी भी करते हैं क्योंकि फायर है इसमें, सुखा देती है वो भी, मेटल है और ड्राइनेस उसकी एनर्जी है। और मेटल इसमें मोस्टली ट्यूबरक्लोसिस के भी प्रॉब्लम वाले आते हैं, टीवी जिनको होता है, या फिर ब्रेथलेसनेस की तो है ही। हार्ट की जितनी डिजीज मिलती हैं, जो वेसल्स हमारे ज्यादा ही कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमना शुरू हो जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम में ही आते हैं वो। अस्थमा वाले भी, हल्का फुल्का अस्थमा नहीं, ये क्रोनिक हो चुका अस्थमा। इसके बाद आते हैं हम रिवर से आगे बढ़ेंगे ही सी पॉइंट। हमें क्या पता है, आज तक कोई नहीं नाप सका कि समंदर में जो पानी है वो कितना पुराना है, कितना गहरा है, उसमें कितना कुछ जमा हुआ है, क्या क्या जमाव हुआ पड़ा है उसमें। वो है हमारी बॉडी की हालत। जब हम पहली पैटर्न से नहीं मानते, पहली चीज को हम नहीं संभालते, सेकंड से भी गुजर जाते हैं, थर्ड से भी गुजर जाते हैं, फोर्थ से भी गुजर जाते हैं, जबकि फोर्थ पे आके खतरे की घंटी बज चुकी होती है। देन 5 पे पहुंचते हैं, फिफ्थ पैटर्न पे, फिफ्थ स्टेज पे। उस स्टेज में इंसान की या तो कैंसर जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर डिपॉजिट इतना बॉडी में, फैट इतनी बढ़ चुकी होती है, इतनी बुरी हालत में उनकी बॉडी जा चुकी है, क्योंकि वाटर किडनी काम करना बंद कर चुकी होती है, फिर डायलिसिस पे जाते हैं लोग, जॉइंट बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं, नीज रिप्लेसमेंट होती है, कभी यहाँ की मूवमेंट खत्म हो चुकी है। इसका पेन बहुत बुरा है शोल्डर का। मेरे पास पेशेंट आते रहे हैं, मैंने देखा है कि उनकी क्या हालत होती है, क्योंकि वो नर्व डैमेज हो चुकी होती है, उनको संभाला ही नहीं जाता। ये सारी हमारी फिफ्थ स्टेज की प्रॉब्लम पहुंच जाती है। इसका एग्जांपल जो मैंने आपको मेटाफिजिकल पहले दिया, अब मैं फिजिकल पे देती हूँ, ताकि आपको डिजीज हल्की, मेन डिजीज मैंने पीपीटी के थ्रू शुक्ला जी आपको बताएंगे, पर मैं अभी ये बता रही हूँ कि फिजिकल पे आपको ये डिजीज, ये पैटर्न, ये कॉन्सेप्ट कैसे दिखेगा। शुरुआत में एक चीज और पहले बताऊंगी कि जब भी आपका दिमाग अपसेट होता है, जब भी आपके ब्रेन में कोई चीज डिपॉजिट हो गई, या मतलब एक बात ले ली, परेशान हो गई, वो जेंट्स हो लेडीज हो कोई भी, तो उनका पेट खराब होगा ही होगा। ये पक्की बात है कि सिर दर्द हुआ तो पेट भी खराब होगा, वो किसी भी रूप में हो। एक्यूट में है तो डायरिया हो जाएगा, एक्यूट में कॉन्स्टिपेशन भी होती है, कॉन्स्टिपेशन भी तो 3 तरह की होती है ना, तो उसी तरह ही एक्यूट में कॉन्स्टिपेशन या पेट खराब होगा, डायरिया हो जाएगा। सिर दर्द का मतलब है कि आपने एक्यूट बात को लगी, कहीं से विंड ने अपना आक्रमण किया, तो उसका आपने पेन ऐसी गोली ले ली, चाय पी ली, इस तरह से आपने जाने दिया उस दर्द को, तो वो आपके पित्त का रूप ले लेगा। क्योंकि वो टेम्परेचर प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी, वो आंखों में भी दिखेगी, वो आपका फीवर भी हो सकता है, क्योंकि सिर पे बोझ पड़ा तो बुखार होगा ही होगा, नहीं बुखार होगा तो वैसी इतनी एंजाइटी हो जाएगी, इतना खिज हो जाएगी, वो गुस्से वाला बंदा पित्त का रूप धारण करेगा उसकी बॉडी में। जब पित्त से सिर दर्द से भी निजात नहीं मिली, पित्त वाली फेब्राइल डिजीज भी हो गई, उसके बाद क्या होता है, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। वो कहाँ, स्टिफनेस, नेक में स्टिफनेस आती है, नेक में स्टिफनेस, सर्वाइकल पेन, क्योंकि सर्वाइकल जोड़ जो है उनके ऊपर वो असर आता ही आता है। पहले ही यहाँ कर लेते हैं तो यहाँ वाली बच जाती है सारी एंजाइटी वाली, फिर अब स्टिफनेस आ गई, अब उसको भी कई लेडीज मैंने देखा स्टिफनेस को भी इग्नोर करती हैं, टैबलेट खा खाती अपना रोटी पानी गुजारा चलाती रहती हैं कि घर देखना है, घर देखना है। वो कितनी क्रोनिक रूप लेती हैं, वो कितना परेशानी करती हैं। उसके बाद बताती हूँ कि वो जब हमने यहाँ पे भी कुछ नहीं किया, उनको थायराइड भी हो जाना है वहीं से, क्योंकि नेक पीछे से बुरी हालत हो रही है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आई। यहाँ से ब्रेथलेसनेस, क्योंकि हार्ट में और लंग्स में आपके वो प्रॉब्लम पहुंच चुकी है। वैसे ही हार्ट में पहुंची है तो एसआई भी हमारी डिस्टर्ब, लंग्स में पहुंची है तो एलआई भी हमारी डिस्टर्ब, पूरे का पूरा ढांचा हमारा डिस्टर्ब। क्योंकि जो एसआई की जो ढांचा है, जिस तरह से वहां वो मुड़ी टूड़ी बनी हुई है, उसी सेम स्टाइल में हमारे न्यूरॉन्स, हमारा सिर का जो सिस्टम है, आपने देखा है ब्रेन की खोपड़ी को कई बार देखा होगा, तो सेम ही एक जैसी है, इंटरकनेक्टेड है आपस में।
इसीलिए मैंने स्पेशली आपको ये बताया कि जैसे ही ब्रेन में यहाँ पे कुछ आया ना, दिमाग में कुछ भी टेंशन आई, कोई भी बात आ गई, किसी की कोई ईर्ष्या ही आ गई, सपोज करो कुछ भी आ गया, वो यहाँ से स्टार्ट होके पेट पे खत्म होगा आके, और वो इतना डिस्टर्ब कर देता है, वो ब्रेथलेसनेस तक ले आता है इंसान को। जब ब्रेथलेसनेस हुई, रेस्टलेसनेस, बिल्कुल सब कुछ खत्म, इंसोम्निया, ढेरों बीमारियां उस टाइम शुरू हो जाती हैं। हार्ट की भी प्रॉब्लम, अचानक से हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल जम गया, उसमें जमाव तो आना ही है, क्योंकि हमने चौथी स्टेज तक ले आए। जब चौथी स्टेज से हम फोर्थ स्टेज से हम फिफ्थ स्टेज में आते हैं ना, तो वेसल जो खून जमना शुरू हो जाता है बॉडी का, क्योंकि समंदर है, कभी ठंडा कभी बहुत गर्म, गर्म हुआ तो भी हॉट फ्लैशेस होती हैं, तो भी हमारी किडनी फेल हो जाती है, क्योंकि किडनी को तो ठंडा चाहिए, ठंडा पसंद नहीं है, लेकिन किडनी की एनर्जी ऊपर जाती है, हार्ट को देती है, हार्ट गर्मी देता है, वो दोनों ही डिस्टर्ब इंटरकनेक्टेड हैं, तो दोनों ही डिस्टर्ब होंगे, तो इंसान की इसी वजह से बाथरूम में जाके कई बार आपने देखा होगा हार्ट फेल हो जाता है, डायलिसिस पे चले जाते हैं लोग। तो वो ही सी पॉइंट, यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, देखो वेल से, अगर वेल को ही मैनेज कर लें, एक्यूट से ही हम समझ लें, ये लोगों के लिए आप कैसे समझना है, आपने दुनिया आई आपके पास, आपने उनको देखना है, अगर कोई यहाँ पे प्रॉब्लम लेके आई ना आपके पास, बहुत लकी हो कि आपको डायग्नोज अच्छे से करना इजी हो जाएगा आपके लिए, तो उसकी बात को सुनो, बहुत अच्छे से उनको सुनो, वो जो कहती हैं नॉन स्टॉप उनको कहने दो, उनका मन हल्का हो जाएगा, उनका यहाँ ब्रेन बिल्कुल हल्का हो जाएगा, उनकी वो प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाएगी। और अगर यहाँ से रिलेटेड लेके आती हैं कि आंखें स्वेल हैं, मैं गुस्सा बहुत करती हूँ, बच्चों की पढ़ाई कर देती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो समझ लें कि वे पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आई है, बहुत ज्यादा परेशान है, तो उसको उस तरह से डायग्नोज करके आप तीसरी प्रॉब्लम लेके आई हैं, तो सर्वाइकल की तो समझ ही सकते हैं कि तीसरी प्रॉब्लम है। अब देखिए आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, आपको मैंने बताया ना कि ये वाले जो आपको ऑर्गन बता चुकी, उनके ऊपर आपको LI1 है, LI2 है, LI3 है, LI5, जैसे जैसे पैटर्न है वैसे वैसे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं, देखिए मेथी के ये 3 दाने मैंने अलग अलग तरीके से लगाए हैं, क्योंकि ये मैंने ट्रिपल वार्मर 6 को समझाने के लिए लगाए हैं। यहाँ पे जैसे ही आपने बात जॉइंट पे अगर आपके पास कोई लेके आता है ना, तो आपने यहाँ पे लगा देना ऐसे, दोनों तो साइड पे आ गए, और एक 6 नंबर पॉइंट जो है वो नीचे आ गया, और खाली यहाँ पे नहीं ट्रीटमेंट करना, आगे वाली मेरिडियन पे। ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ट्रिपल वार्मर 6 को कहीं लोकेशन में आपको दिक्कत ना आ जाए, एक ही लाइन में ना आप लगा दें, आप देखना समझना, बार बार वीडियो को देखना, तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो जो मैं जिस जिस जगह पे भी जा रही हैं, आप उस डिजीज को उसी तरह से ट्रीट कर सकती हैं। कोई वाक पर्सनैलिटी वाला अगर पर्सन आया है और आप चाहें उसकी पर्सनैलिटी चेंज करना, मैं थी, वाक ज्यादा था मुझमें, स्टेबल नहीं थी, आप उसकी पहचान कैसे करोगे, आपके पास वो पेशेंट आया, 5-7 पेशेंट आपके पास बैठे हैं ना, तो वो कोई ना कोई तिकड़म लड़ा के किसी ना किसी तरह से आप तक सबसे पहले पहुंचने की कोशिश करेगा, सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर पे वो पहुंच ही जाएगा आप तक। वो आप समझ लेना कि ये बात प्रकृति है, क्योंकि उसका वो थिम पतला भी होगा, फैटी नहीं होगा बिल्कुल, वो मूवमेंट ही रहती है उसकी, घूमता ही रहता है उसकी, तो इतनी इजीली आप उसको ना, पहले आप कुछ इलाज ना करने के लिए उसको कहें कि घर जाके भाई यहाँ पे 3, यहाँ पे आप 3 उसको मेथी के दाने लगवा दें, यहाँ 3 और यहाँ पे आगे, मैं दूसरी फिंगर पे बताती हूँ क्योंकि वहां मैंने प्लॉट कर काफी खिचड़ सी होती है। ये देखिए, ये आप 3 यहाँ पे मेथी के दाने लगा दें, और 3 यहाँ पे मेथी के दाने लगवा दें, उसको 10 दिन के लिए ये ट्रीटमेंट डेली करके उसको कहीं सोए, बेशक सारी फिंगर पे ही करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी प्रकृति चेंज हो जाएगी, नेचर इतना बदलाव आएगा 10-15 दिन में, और 21 दिन अगर कर लिया तो डेफिनेट बदलाव आएगा। इसी तरह पित्त की प्रकृति भी चेंज की जा सकती है, इसी तरह कफ की प्रकृति भी चेंज की जा सकती है, टाइम लगता है, कफ की प्रकृति में थोड़ा टाइम लगता है, काफी टाइम लगता है। ये तो हुई वात की प्रकृति को कैसे ठीक करें, नेचर को कैसे ठीक करें, मेडिसिन डिजीज को कैसे ठीक करें। अब मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से तो अभी बता दिया, बाकी पीपीटी पे आपको शुक्ला जी कंटिन्यू करेंगी और बता देंगे अच्छे से, फिर भी अगर समझ नहीं आया तो आप प्लीज बेझिझक आप डाल सकते हैं ग्रुप में, और कोशिश करते हैं कि लास्ट में सेशन रखा जाए ताकि आपकी
आज वाली चीजों की और लास्ट वाली चीजों के संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने धैर्य से सुना। कंटिन्यू शुक्ला जी। Okay, that was wonderful. All right. So now let us see the location of the meridian on Biol. So, all right. So very, I think everyone, knows that this is, this has downward flow. I was so engrossed in Nishaji's, thing that I'm just lost. Anyway, let me come back. All right. So this is a large intestine meridian. See, what you have to do is you have to make two straight lines here, from the base of the nail so that it is visible, from front. It shouldn't be on the borderline because then that will be wrong. This I had mentioned in the last class also. So what you have to do from the first joint till the nail base, just make equal sections. Okay. Now Li1 is at the base of the nail. Then on the first section here, first line here, we have Li2. Okay. On the third line, we have Li3. Leave one line from here. Now this is Li5. This is a fire point. Then come on the second joint, and this is Li11. This is a earth point. Now, can you see the sequence that is going here? Metal, water, wood, fire, earth. So when this particular point starts from metal, the sequence will flow like this only. It will be metal, water, wood, fire, earth. Okay. Next. Now this is a triple meridian. Here, right in the center at the nail base, make a straight line. Again, make equal sections from the first joint till the nail base. Now, you see here, when I say equal sections, see, there is a slight change over here. So right when you plot triple warmer 1, you have to leave little space here. This is 2, this is 3, leave one line, leave the first joint, and here we have triple warmer 6. Now see the sequence, how it is going. So triple warmer 1 is metal point. After metal, what comes after metal? Water. Triple warmer 2 is water. What comes after water? Wood. Triple warmer 3 is wood. Triple warmer 6 is fire. And triple warmer 10 is earth point. Okay. Now let us check the small intestine meridian. Now again, from the base of the nail towards the left, towards the index finger, here is small intestine 1. Again, make sections from first joint till the nail base. Now see, I have made here equal sections 1, 2, 3, and the joint is the first joint is the fourth. All right. So SI1 is just at the base of the nail. Then on the second line, we have SI2. Then on the third line, we have SI3. Leave one line. On the first joint, we have SI5. And on the second joint, we have Si8. Now again, check the element here. It is metal, water, wood, fire, earth. Okay. So this is all together so that you know how it is plotted. Can you see the Li meridian? It is towards the thumb. Can you see the Si meridian? It is towards the middle finger. And the triple warmer is right in the center. So it's easy, right, to understand. Okay. So I had told you that I will be asking you something about the last class. So let us take a revision over here. So see, in the last class, we did lungs, pericardium, and heart. So let us just revise. See, this is a yin meridian. So it will start with wood, and that was yang meridian, and it started with metal. So this is important to remember. So how it goes: wood, fire, earth, metal, water. So this will be the sequence. This sequence you have to remember. All right. So in lungs, in the lung meridian, you see Lu11 here, Lu10 here, Lu9 here, Lu8 here, and Lu5 here. Pericardium meridian, this I have already explained, but then again, I'll just go through one so that, everyone remembers. So it is P9 is here. See again, the element, the sequence you should remember.
So P9 is here. P8 is here, right in the center. P7 is on the first joint. P5, you have to leave one line from the first joint, and on the next line, not the joint, next line, we have P5. On the next joint, that is the second joint, we have P3. Okay, and this is heart meridian. So H9 is at the tip. H8 is right in the center. When you make two sections from the first joint till the top line, then there is H8. Then we have H7. Then again, when you make sections from the first joint to the second joint, then you have this H4. And on the second joint, we have H3. Okay. So let us just, repeat it once more so that it is, okay. So repeat with me again. What are the 5 shoe points of lungs? Okay. Tell me 11, 10, 9, 8, 5. 11, 10, 9, 8, 5. Okay. What are the shoe points of pericardium? Just a minute. All right. So P9, 8, 7, 5, 3. 9, 8, 7, 5, 3. Okay. Let us repeat the heart meridian. It is H9, 8, 7, 4, 3. H9, 8, 7, 4, 3. So that, because when you remember these points, you can easily, make protocols, and even you can apply any methi seed or magnets or whatever is comfortable. So this I have compiled it together so that it is like, easy for you to understand where exactly is the body plotting, and you won't have any confusion. Okay. So we were talking about the Jingwell point and, river point and stream point. So what is that basically? So if I, explain it this way, see, these are all the stages of the diseases. If I say stages means, see, when there is any acute problem, any person who complains of any acute problem, like say headache or anything like that. So remember that this is the problem of the Jingwell pattern. So this is the first stage of the problem. The second stage of the problem is yin spring problem. Say for example, if person has headache, that is a first stage problem. But then if you do not take care there, or maybe it exceeds and then it turns into migraine, so that is spring problem. That is a spring stage problem. So then you have points. I will explain it to you a little later because I've compiled it together so that you know how to locate it and how to treat particular diseases. Okay. Then the problem aggravates. Then that is the third stage, and that is a shoe stream point. Then another stage, that is the fourth stage, that is a Jing river point. Now mostly what happens that the patient whoever comes to us, they come in the fourth stage. Already the problem has reached there. Okay. And if I say fourth stage is related to the joint problem. So almost like in the initial stages, people, they feel that yeah, okay, fine, I'll get well. They do not care, or maybe it's like okay with them, or I mean, like whatever it is. So when they come at this level. Okay. Now this is the fifth level, which is actually the chronic problem. So that stage. So anybody who comes to you who has a chronic problem, immediately it should click in your mind that you're okay, this is a he-see problem. So now I have to just focus on the he-see points. Are you getting me? Is it getting clear? So these are the stages, I would say. These are the stages of the diseases. So any person who comes with headache, you will immediately, it will click you that yeah, okay, Jingwell problem. Okay, come on, I'll put the point here. Okay, getting it? Okay. Now in detail, I will be explaining it to you how to particularly go with the plotting. So as I have already revised with you that all the yin meridians starts with wood element. The first Jingwell, I mean, it starts with Jingwell and it is a wood element. So how does this particular sequence go? It is Jingwell, spring, stream, river, and he-see. And how are the elements located? It is wood, fire, earth, metal, and water. On the yang meridian, all the Jingwell points are metal point, remember that. And then you have to follow the sequence. So metal, water, wood, fire, earth.
Here, how did we go? Wood, fire, earth, metal, and water. Is it clear? So here, the first point, that the Jingwell point is metal element. Then after Jingwell, we have spring point, which is water element. Then we have stream point, which is wood element. We have river point, that is the fire element. And then we have he, sea point, which is the earth element. Okay. Now, so this is the Jingwell point, and it is located. You have one second. Let me adjust the screen here. Okay. So the Jingwell point on the yin side is Lu11, P9, and H9. And we have already located it on the Beol. You can see the location over here. On the side, I've put the picture. So it is Lu11, P9, and H9. Okay. On the yang side, we have Li1, triple warmer 1, and Si1. So here it is located on the base of the nail. That is Li1, triple warmer 1, and Si1. Okay. Now these are the Jingwell points. Now this is a Jingwell point. That means the first stage of the disease. So in this, the diseases like, headache or maybe epilepsy or any kind of emergency, immediately you can just, press these points, or else you can, apply a methi strip around, horizontally. So you can apply a methi strip. So whenever any person comes and you feel that there is an emergency, just apply methi strip. So now, or else you can even apply single methi dana on single points. But I would suggest, putting a methi strip would be easy. So it is taken care of. So in this stage, the problem is acute. It has just come, immediately. So then how to treat it. So see, basically our goal is to make you understand. Many times we don't know, like, what is the problem? What do I do? How do I treat? So this becomes a little easy. Now we know that, yeah, this is a Jingwell problem. So Jingwell problem can be treated with these points. Okay, on the first line. Okay. Now this is, one second, I have to always, yeah. All right. So this is the spring points. On the inside, we have Lu10, P8, H8. On the yang side, we have Li2, Tw2, and Si2. Okay. Now remember, here on the inside, it starts with fire. On the yang side, it starts with water. Now, when the fire and water, when they come together, what does it make? It makes, pith. It makes, acid, not acid exactly, but it's like pith. Okay. So and this is the second stage of disease. So any temperature related disease or pith related disease you can treat here. Okay. Just see the location of Lu10, P8, and H8. This is on the yin side. On the yang side, we have Li2, Tw2, and Si2. Now, what kind of pith related problems? Maybe fever, febrile diseases, feverish. Whenever you feel feverish, you can apply, this methi strip over here. Or maybe high blood pressure, or maybe any fluid problem, urine retention. You can use these points. The third stage of the disease is stream, shoe stream points, or shoe stream stage, I should say. So any joint related problem will come under this. Why? Because on the inside, we have earth points. On the yang side, we have wood points. So when earth and wood, when they both come together, so then we get this joint related problems. Okay. Earth is basically, it's like deposition, So this is a third stage. Any kind of pain, whether you have shoulder pain, ankle pain, knee pain, any pelvic pain, any pain can be treated over here. Let us see the location. What are the stream points on the yin meridian? We have Lu9, P7, and H7. On the yang meridian, we have Li3, Tw3, and Si3. Just see the location so that, it's clear with everyone. Now, this is the fourth stage of problem. Okay. Now, when I say fourth stage, the problem has exceeded, from the third stage. Maybe we did not take care, or maybe it did not get well. So now the problem has gone to the fourth stage. So what kind of problems, comes under the fourth stage? Anybody complaining about breathlessness, or maybe, bronchitis, or any kind of these kind of problems, then it should click you that you're, oh, okay, this is a fourth stage problem. All right. And it is the river problem. So then where will you treat?
Here it is like on Lu8, P5 and H4 on the inside, and on the yang side we have Li5, Pw6 and Si5. Now this is metal and fire. Metal and fire, when they both come together, so these kind of problems arise. Now this is He-Si points. Now this is, you can see the yin, on the yin meridian we have water point, and on the yang meridian we have earth point. Now when earth and water, when they come together, it's like too much of maybe cuff, too much of deposition, too much of, it's a fifth stage. I mean, like it's a final stage, because after this or on this stage, it is very difficult to treat. Yes, we can have some temporary relief, but still it is like, little difficult to treat. So once when you come to know that this particular person has come with tuberculosis or malignancy or cancerous stage or edema or pleurisy, so then you should remember that this is a fifth stage now. It is a He-Si stage. Okay. So then accordingly, you can tell the patient and treat them. All right. I hope it is clear with everyone, or you want any repetition? You want me to repeat any slide, or is it okay? You can put it on the chat box. Yes? Clear? Okay, fine. All right, so this is all for today. This is a small effort that we have done to make it a little easy. Any questions or any query, if you have, we can take it maybe at the after we finish all the 4 meridians, so then it would be easy. So this is all for today. I hope you must have enjoyed our small effort. Tomorrow we have the class at the same time, 4 to 5 or 5:30, and we will be covering the next 3 meridians. So thank you so much. Over to you, sir. Thank you very much, madam, for an excellent rendering of the not only location, even their importance in terms of their energy, whether it is wind or hot or humidity or dryness or coldness. It is beautifully explained, and the importance of 5 show elements. For example, you have done, explained beautifully the importance of dual points which are used for acute emergencies. Plus, see, jingle is wood on the inside. Yang said it is metal. Metal means, it is also related to space. So wood and space is air and, space. It also means vata. So any vata disease can be treated by treating a jingle point, not in addition to acute emergencies. I am sure all my, participants have enjoyed this. And second is for febrile diseases, because as you said, it is related to temperature, because it is, one is fire on the backside, it is water. Fire and water means pitta, plus febrile diseases. Beautifully explained. If there is excess heat, we have to increase the cold, or if excess cold, we have to increase the fire to balance it. Very nice. And third one is, we call a stream point. It is also beautifully explained that it is related to rheumatism, where due to weakness of wind, earth means accumulation. Earth means, inflammation. Okay, turbidity, etc. Because there is no wind. When we increase the wind, it will disperse. So naturally, any rheumatism will go away. Beautifully explained. And fourth one is, river. That is, one side we have metal, on the other side we have fire. The related organs are lungs and heart. That means respiratory and circulatory system. Anything related to breathing, could be asthma, anything related to breathing difficulties. Very beautifully explained. Then He-Si point is, is for, on the one side it is earth, on the other side it is water. Inside it is water.
Earth and water means kapha. So anything related to kapha, anything related to external pathogenic factors like, contravections, etc. If somebody has got only nausea, we can treat on yang side. If somebody has got vomiting, including liquid and all, we can treat on inside of the, PC points. And all the 5 shoe points are related to water in terms of their potential. Well has got some potential. Higher potential is spring. Still higher potential is stream. Still higher potential is river. Abundant potential is sea. It has been explained very well in very good, clear terms. Thank you very much, madam. Thank you, I sir. don't know. I mean, if I simply say thanks, it doesn't, justify. I don't find words also to thank both of you. So we'll Thank catch you, up sir. tomorrow in the same Zoom ID. On day after tomorrow, our Zoom ID will change. I'm going to notify you tomorrow. Okay, sir. Thank you Thank so you, much. sir. Thank you very much. We are May God honored, bless. sir. Thank you. Be Thank you, blessed sir. by the demand. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much.